So hi, I was just saying, right? So when we speak with a lot of sellers, one common sentiment, what we understand and what we been continuously told for ages is return is my biggest problem. I've been always facing losses in terms of returns. मैंने तो एक shipment बेचता हूँ, the same shipment वापस नहीं आता है. मेरा बहुत सारा नुकसान रिटर्न्स की वजह से होता है. I've been spending a lot of money on I've been investing it, but this return is killing my business. So these are all the common problems what we generally face, and on top of it, there are a lot of delays. You will have frauds. You are having like not right compensation. These are the basic issues what we've been hearing for ages now. And sticking to our idea of building a more transparent and more empowered marketplace, which is like हमको बहुत एक ट्रांसपेरेंट और एक सेलर फ्रेंडली मार्केटप्लेस बनाना चाहते हैं हम. उसी एजेंडा में हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाया which is solving for this return as an perennial problem for sellers, right? And when we also understood in detail, there were three areas where sellers are sellers were facing maximum problems. One is currently वो returns तो आ ही गया और returns तो approve हो गया, but everything is blind. Once the return is approved, I don't know how much is coming back to be, when it is coming back, and when we are currently return एक बंदा लेके आता है, and when he is trying to deliver returns, I don't know what is he delivering, what is he scanning. I just have to believe him. I don't have any communication of what is being marked or what is being scanned by the guy who is coming to my place. So एक blind perception around return is one of the biggest problem. मेरे को returns के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सारा scans कितने returns आ रहा है, कितने क्या मार्क कर रहा है, सारा अभी तो एक ambiguous space है. Second problem is like I am like if I put some money in Flipkart, that money, if it is coming back as a return, I don't know when that return is going to come. It is taking a lot of time. So returns delivery as an problem statement is also one pressing factor for a lot of sellers. This is a feedback which we have got. And third is, ठीक है, I've gotten wrong return. मेरे को एक गलत return मिला है, उसको मैंने claim करने के लिए जाता हूँ, तब the adjudication team tells that after you prove, but the team tells that no, there is no issue with the product. इसमें तो कुछ issue ही नहीं है, इस product में मैं SPF अभी approve नहीं करेंगे. ये तीन वाला प्रॉब्लम है ना, बार बार हमको सेलर्स बहुत बार बोल चुका है. हम अभी फाइनली ठीक है, इसको तो सॉल्व करना ही है, एंड वी हैव बॉट few structural solves to it. The whole idea behind the solve is make more seller empowered and show as much transparency as possible. I'll just repeat that in Hindi. All these ये problems हम उठाने के बाद हमको एक ही मोटिव था, सेलर को जितने empower कर सकते हो उतने empower कर लीजिए. Second, जितने ट्रांसपेरेंट कर सकते हो उतना ट्रांसपेरेंट कर देता है. So this is the whole idea, and I'll just quickly take you into what have we built and how you can utilize that, so that we all can ultimately the whole objective is we build something and you utilize it, then that makes sense for us to go ahead and deploy that solution or scale that solution. So first we wanted to explain you that, right, what we have built. Let's go by one, like every problem statement, एक problem statement बोल देता हूँ, उसका इश्यूज क्या है, उसके वजह से सेलर का क्या परसेप्शन है, फिर मैं सॉल्व्स के ऊपर जाता हूँ कब वो लॉन्च होने वाला है. So this will be the pattern. Like I'm just repeating it again, where we will have, first we will start with the problem statement, the problems, how sellers are understanding it, and then what is the solve which we have built and how and when it will be live. Okay? So this is one of anecdote what we hear very often, that every day an FE says that I have delivered 100, I have scanned 120, but when he gives back, when I count it physically, it is only 95, but system it is showing that 100 is delivered, right? हिंदी में क्या होता है, तो FE बोलता है कि मैंने तो 100 स्कैन कर लिया, 150 स्कैन कर लिया, बट मेरे को तो फिजिकली 5 शिपमेंट 10 शिपमेंट कम ही मिलता है फिजिकली में काउंट करने के टाइम पे, बट सिस्टम में देखा जाए तो वो जितना से FE बोल रहा है उतना तो डिलीवर मार्क हो रहा है.
वो 5 यूनिट का मेरा नुकसान है, सीधा नुकसान है, राइट। ये इसका रूट कॉज क्या है, इशू क्यों हो रहा है, वो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्व क्या है वो हम वहां पे जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, सारा डिलीवरी जो भी अभी FE टू सेलर हो रहा है, द होल डिलीवरी इकोसिस्टम बिटवीन एन FE टू सेलर, इट इज ऑल ऑफलाइन, सारा ऑफलाइन में हो रहा है। So whatever is scanned done in FE's buyout, nothing is reflecting anywhere. So nobody knows what is he scanning or what is he marking. If there's an open box delivery, is he marking issue, no issue? Is he capturing photos or is he just skipping? No visibility is shown to seller. So this problem statement has empowered FE so much that FE is currently scanning few shipments in before even reaching the seller location. He scans some shipments outside the seller location and he comes inside, scans the rest of the things, and he will take those 5 shipment and shipment what he has scanned outside to his own home, right? हिंदी में बोला जाएगा तो हमारा इशू अभी ऐसे है कि एफई को इतना एम्पावर हो चुका है क्योंकि सेलर को कुछ भी दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो एफई क्या करते हैं, वो 5 शिपमेंट 10 शिपमेंट सेलर का वारोस आने से पहले ही स्कैन करवा देता है, एंड सेलर वारोस आने के बाद जितने बचा हुआ है वो स्कैन करके दे देता है, बट ओटीसी तो पूरा यूनिट्स को डाल देता है, एंड वो जो भी बाहर स्कैन करके रखा है वो तो उसका घर लेके चले जाता है। वो कैसे हो रहा है, द मेजर इशू इज बिकॉज वी आर वर्किंग एवरीथिंग इन ऑफलाइन. The risk is what we just explained, where if he is able to take it conveniently to his own home. And as a seller, you guys are facing issue because you don't know anything what is scanned until end of the day trip sheet. 10 baje you will get, and 10 p.m. you will get an confirmation that what is being scanned in the digital POD. Till then, there is no visibility shared for sellers. This was one of a problem statement where a lot of sellers have complained us. So how we have solved it? We have got an industry first and then first time ever deployment that every transaction happening in seller doorstep will be on real time in returns. So like मैं एक demo दिखा देता हूँ. I will be showing a demo for everybody to understand it and able to relate to what I was saying. But as an update, what I'm trying to tell here is every scans done by an FE, first of all, he has to come to your location and he has to take your confirmation to start a process. And as he is doing the process, you will be able to monitor in your dashboard in real time. And as he ends the process, he should take a confirmation from you to close the process. In between what he has done, you will get it as a summary before you share the end OTC. So all the transactions done in your doorstep is shown to you in a more transparent way, and you are empowered to understand and then share an OTC. Right? This is what we meant by real-time reconciliation here and dynamic start and end OTC. Real-time reconciliation is nothing but every updates are instantaneously updated, shown in the seller dashboard. Dynamic start, dynamic end is today every FE is like, let's say if you are a bulk seller, then there are multiple FEs coming to you, but there is only one OTC. So what FEs are doing, the first FE takes your OTC, he shares it to a lot of other FEs, and then he will, like the third FE or the fourth FE can scan anywhere outside and he can enter the OTC and close the task. This was creating a lot of room for last mile frauds. हिंदी में बोलिए तो समझ आएगा सबको. हाँ, मैं बोलूंगा, दोबारा रिपीट करूंगा. देयर आर सम, थोड़ा लोग को हिंदी पे नहीं आता है, मैं दोबारा एक बार रिपीट करूंगा. अभी 2 मिनट के लिए थोड़ा पेशेंस कर रख लीजिए, मैं एक बार खत्म कर लेता हूँ इसको. So like now every FE will get his own unique codes and he will be able to like he should come and report to you. You will check his code, you will deploy that, sorry, you will be sharing the code. He has to write that code to start a task or end a task, and every FE will get his own codes, not common codes, so that he can do a fraud. Right? This is a feature which we have already launched to a lot of sellers, and we are scaling up very aggressively. So as you keep, like if you can keep monitoring your returns dashboard, you can find the changes in this week itself. Right? I'll just reiterate this in Hindi. एक बार हिंदी में बोल देता हूँ. हमने अभी ऐसे एक सिस्टम लॉन्च किया है कि सारा ट्रांजैक्शंस ना अभी आपको लाइव दिखेगा डैशबोर्ड में.
कौन आ रहा है, कितने बजे आया है, वो आने के बाद आपका अप्रूवल लेगा, वही है स्टार्ट ओटीसी। अब अभी पूछेगा अभी क्या कर रहा है वो बंदा, बाहर ही रुक के थोड़ा 2-3 यूनिट को स्कैन करके अंदर आके बचा कुचा इसको स्कैन करके वो पूरा ओटीसी लेके डाल दे रहा है, वो 2-3 यूनिट उसका घर लेके जा रहा है। ये सारा जगह पे नहीं होता है, बट वो होने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा है, थोड़ा जगह पे तो बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा क्लब प्रॉब्लमेटिक क्लस्टर्स में। अभी हमने ऐसे एक सिस्टम लेके आया है कि वो अभी पहले सेलर का जगह पे आए, आने के बाद वो बोले सिस्टम को कंफर्म करे कि मैं तो आ चुका हूँ सेलर लोकेशन पर, फिर सेलर को एक स्टार्ट ओटीसी वाला ऑप्शन आएगा, आप ओटीसी तब दोगे, वो एंटर करने के बाद उसको ट्रांजैक्शन शुरू होगा। जैसे वो स्कैन करेगा 1 2 3, आपका डैशबोर्ड में कौन सा ट्रैकिंग आईडी स्कैन किया है, क्या मार्क किया है, इसको ओबीडी किया है कि नहीं, उसमें ओबीडी करने के बाद उन्होंने इश्यू मार्क किया और नो इश्यू मार्क किया। इश्यू मार्क किया तो उसका इमेज लिया, वो इमेज कौन सा इमेज लिया, वो आपको इमेज के हिसाब से सब सेलर डैशबोर्ड में रियल टाइम में आ जाएगा। इसके वजह से क्या फायदा है, जैसे वो पूरा स्कैन्स खत्म करेगा और आप उस स्कैन खत्म करने के बाद आपको एनओटीसी देने से पहले एक समरी आ जाएगा, एक रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा उस एफई का। एएफई योगेश करके एक बंदा है, 150 यूनिट स्कैन किया है, वो स्कैन करने के बाद उसमें उसमें 50 ओबीडी किया है। ओबीडी का मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी है। वो ओपन बॉक्स डिलीवरी में उन्होंने क्या मार्क किया है, कितने इशू मार्क किया है, वो इशू के अगेंस्ट में फोटो लिया है कि नहीं, फोटो लिया है तो कौन सा फोटो लिया है, सारा आपको रिपोर्ट करा जाएगा। आपको काउंट सारा मैच होने के बाद आप ओटीसी दोगे वो योगेश करके एक आदमी को। अभी दूसरा गणेश आएगा तो गणेश को अलग से होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका जिम्मेदारी योगेश की जिम्मेदारी योगेश के पास ही होगा, वो मिलके फ्रॉड नहीं कर सकता। यही है एक एक फीचर हमने ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, बहुत सारा सेलर्स को तो ऑलरेडी विजिबल है। हम अग्रेसिवली इसको स्केल कर रहे हैं, इस हफ्ते में सारा सेलर्स को आ जाएगा ये वाला। बट राहुल क्वेश्चंस? राहुल बट एफई के पास में टाइम नहीं होता वेट करने का कि वो वेट करे और हम क्रॉस चेक कर पाए। सिंस इट इज रियल टाइम स्कैन्स और रियल टाइम में आपको दिख रहा है, आप पैरेलली कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एक बार डेमो दिखाऊंगा आपको, आपको उस एक बार देख लीजिए। आई विल टेक द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड आफ्टर वी सी द डेमो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नोटेड। ठीक है। One more update is, if you are a bulk seller, like which means if you have a good amount of returns, you will be having a direct bag coming from a warehouse to your seller doorstep. It will not come to an first mail hub and it will come to you. मतलब ये कि सील्ड बैग, एक फिजिकल सील के सील लगा होता है, वो सील डायरेक्टली आपको घर तक लाइक वी विल ब्रिंग दैट बैग डायरेक्टली टू योर डोरस्टेप, and that seal ID will also be shown to you. Right? This is a very strong trust marker what we are bringing into the ecosystem to upfront tell you that we are cutting down lot of people involving in handling your shipments, so that the chances of frauds will go down very significantly. Right? Let me just reiterate in Hindi. So हम अभी if आपका return shipments एक बैग से ऊपर है, लोड एक बैग का लोड से ऊपर है, तो हम अलग से आपके लिए एक बैग डायरेक्टली बड़ा वेयरहाउस से बनवा के आपको घर तक लेके आएंगे। उस बैग एक फिजिकल टैग से लॉक किया होगा, वो लॉक में एक यूनिक आईडी होगा, वो आईडी आपको डैशबोर्ड में दिखना शुरू कर देंगे, डैशबोर्ड में दिखाना शुरू करेंगे। वो आप जैसे वो बैग आएगा आप वेरीफाई कर सकते हो यही बैग इसी लैब से आया कि नहीं, और किसी ने तो बीच में टैम्पर कर लिया कि नहीं, वो वाला आपको डायरेक्टली वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन भी है। ये क्यों किया है हमने, जितने कम लोग आपका शिपमेंट को हैंडल करें उतना फ्रॉड का चांसेस कम है, उतना लॉसेस का चांस कम है। सो ये वाला अभी के लिए सारा ये ई कार्ड के लिए 3PL को हम अभी देख रहे हैं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरा कंपनी हो जाएगा। अभी सारा ये ईकेल में हेवीली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये वाला दिस D2S फीचर और ये विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम April 1st. So we have launched the real-time scans and dynamic start and end OTC. This D2S bag will be launched by April 1st. Right? I'll just quickly show a demo video.
So we will understand how does this work in real-time scenario. Let me just refresh the slide. Just give me a minute. Yeah. Just, okay, I'll quickly show you the other video first, which is dynamic end OTC, and then I'll come back to the dynamic start and end OTC. So, okay. This is how a new UI will look like. Yeah, abhi aapko new UI hai. Everybody can start looking at this window to understand what is this. हम दो कॉन्फ़िगरेशन लेके आए, जैसे बोला कि स्टार्ट ओटीसी एंड ओटीसी है. दूसरा एक फीचर है which is only dynamic end OTC. Like as somebody has pointed out that if FE there would be a lot of communication needs if I'm introducing a lot of OTCs. So wherever we don't have a problem, we will not have start OTC. We'll have only dynamic end OTC. For a respective FE, you will have a unique code to end this task. हम दो फीचर एनेबल किए हैं. एक तो स्टार्ट ओटीसी एंड एंड ओटीसी सारा डायनामिक में होगा, मतलब एक एफई के लिए अलग स्टार्ट होगा, अलग एंड होगा. दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन में क्या होगा कि स्टार्ट वाला नहीं होगा, बट सेपरेट एफई विल गेट दिस, मतलब एक एक एफई उसका रेस्पेक्टिव एंड ओटीसी उसको मिलेगा. वो नया यूआई ऐसे जैसे दिखेगा. अभी आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा कि चेक अपडेट्स एंड शेयर ओटीसी, या राइट. If an FE is If an FE has already reached to your location, if you have started the scans, you can go and click on this button, check updates and OTC. When you click it, Saksham Das is the guy who has scanned 120 packets and he has marked 15 as an issue. Right? You will get who is there and how much he has scanned, how much he has marked as issue. This number will be done increased in real time. They say he scans 120 first packet, it will show here 121. And how many issues are reported will also be shown directly here. They say if he's like, I have done my scans, 120 is my overall unit what I had. I am done with my scans. जैसे मेरे को सारे 120 units लेके आया, वो सारा खत्म हो चुका है. तो then you can click on this end OTC. Review an end OTC. You will get an end OTC which you can share only with Saksham Das. Okay. If I show you one start plus end OTC, we can understand it in detail. Just give 1 minute. We are just facing one technical issue. Yeah, I think it is working fine now. Just okay. This is not clear. Is Pankaj there on call? Yeah, Raghu. I think this rendered video is not clear, so let's not be able to see. Let me just show the original video. I hope that's okay, right? Sorry? I'll show the original video. This video is Yeah, not, if you are able to show that, then you can. yeah. Is it visible now? My display? Yeah. Yes, sir. ठीक है. हम अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट साइड है ना, दैट इज एफई का फोन है. एफई जैसे लेके आता है ना, उसका बायोट लेके आता है. राइट साइड है हमारा सेलर डैशबोर्ड, नया यूआई का सेलर डैशबोर्ड है. राइट. एज like let's say PN Sales is a seller, FE is having 290 products to deliver for return task. 290 units has to be delivered to that particular seller in a day for returns. 2 people have come. One is Yogesh, one is Ganesh.
we have pinned the Yogesh phone ka screen here. Ganesh is not pinned here, but Ganesh is also delivering the task. Okay. जैसे योगेश का डिवाइस यहाँ पे पिन करके रखा है, गणेश भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, गणेश भी आया हुआ है कि एक उसका ये 290 यूनिट्स रिटर्न देने के लिए. Once the FE is here, he has to click on this start task, right? If he has clicked on the start task, then it will give him a signal to ask for start OTC from seller. So seller, what he would do, he would have to click on this blue button, generate start OTC. Let's say generate start OTC, if you click, you will get an name saying Yogesh Anil Patil has reached the location at 1:50 PM. इन्होंने 1:50 स्टार्ट ओटीसी रिक्वेस्ट दिया है. हम सेलर एक यहाँ पे जनरेट एंड ओटीसी का बटन दिखता है, वहां पे आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाता है कि कौन आया है, कितने बजे आया है, उसका आप यहाँ पे ओटीसी निकाल के दे सकते हो टू स्टार्ट द टास्क. उसका ओटीसी हो गया 203573. तो एंटर जैसे करेगा तो स्टार्ट करेगा टास्क को. जैसे यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यू कैन क्लोज दिस विंडो. आप क्लोज करने से उसका कार्ड यहाँ पे बन जाता है. दिस वी कैन ऑब्जर्व दिस. नाउ यू विल गेट अ कार्ड सेइंग योगेश अनिल पाटिल इज हैंडिंग ओवर फ्रॉम 1:50 PM. 1:50 से उन्होंने स्कैन करना शुरू कर दिया. Here you will have how many scans he has done, and here you will have how much issue is marked by him. And if he says that I am done with my transaction, you can check this count, you can check and check this issue reporter, and you can generate NOTC only for Yogesh. Second guy, Ganesh is also here. Ganesh ka NOTC you can generate and share it with him once Ganesh is done with the transaction. We'll just quickly see how it will work in real time. This is Ganesh ka start OTC. Now first, they will be scanning the D2S bags, like the direct bags, 4 bags he has bought. He will scan those 4 bags and he will start the shipment count. So 290 shipment he has totally, they have to deliver 2 FEs combined, they will deliver 290 units. The Yogesh is scanning from his end here. Okay. जैसे योगेश यहाँ पे स्कैन करता है, 1 shipment he has scanned. He's scanning the second shipment. Here you will get the count updated here. So he has scanned 4, यहाँ पे 4 you have got. उसके against पे you will get this 5 seconds. Within 5 seconds you will get the updates coming to your dashboard in real time. You can check if he has marked anything as issue, what is that issue, and you can validate against which tracking ID. कौन सा tracking ID against में उन्होंने क्या मार्क किया है, issue मार्क किया है, कितने स्कैन किया है, सारा आपको रियल टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे आपको आएगा ना वो दोनों एफई का मिला के कितने स्कैन हुआ है वो यहाँ पे डायरेक्टली होगा. Like basically expected today say it will go down and it will increase in handover in progress. Right, so he scanned 15 shipments. Let's say he scanned 14. It will get updated here. 14 will come here. So this is the real-time scans, right? Like you can check in between 36. He has scanned 36 is shown here against Yogesh. And he has marked 1 unit as an issue. They say towards the end, if you go and check, he has total scanned 141 shipments. यहाँ पे आपको आ गया यूनिक शिपमेंट्स ही हैज स्कैन्ड फॉर 140. एक शिपमेंट उन्होंने दूसरा आदमी का दोबारा भी स्कैन किया है, बट सेलर को सही कितने स्कैन किए उतना यूनिट ही आएगा. इफ यू हैव स्कैन डबल स्कैन द प्रोडक्ट एंड ऑल, दैट इज नॉट सेलर प्रॉब्लम. फॉर सेलर इट विल शो यूनिक शिपमेंट्स कितने ही मिला है और हाउ मेनी यूनिक शिपमेंट्स दैट यू हैव गॉट, दैट विल बी शोन हियर अगेंस्ट द सेलर FE ID. So total seller got 290 shipments here. Ganesh has given 150 shipment, Yogesh has given 140 shipments. Ganesh ने 150 दिया है, योगेश ने 140 दिया है. उसमें कितने इशू है वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा रियल टाइम पे. जैसे उन्होंने कर रहा है इमीडिएटली आपको आ जाएगा. अभी ये बंदा बोलेगा कि मेरा टास्क तो खत्म हो चुका है, आई एम डन विद माय सी. इफ यू कैन सी 141 he has scanned.
in that one unit he has scanned double time, और वो दूसरा आदमी का प्रोडक्ट he has scanned again once, which means गणेश एक बार स्कैन कर लिया, उसी प्रोडक्ट योगेश भी एक बार स्कैन किया, उससे सेलर को फर्क नहीं पड़ता है, जैसे उन्होंने क्लोज करता है ना उसका समरी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि 140 यूनिक स्कैन है, वो एक तो तुमने 2 बार स्कैन किया है वो वाला, जैसे आपको देखोगे यहाँ पे 140 यूनिक स्कैन हो जाएगा उसका डिवाइस पे भी, and seller device number will also start matching. And 58 shipments he has delivered in OBD. You can see the same details in Yogesh ka card. Under Yogesh ka card खोलोगे, you will get the details. Like when you generate NOTC, you will find the same detail there. Now we went to NOTP screen. Now you can go to this NOTC of Yogesh. Saying that how many shipment Yogesh has scanned. He has scanned 140. 140 यूनिट योगेश ने स्कैन किया, उसमें 58 यूनिट्स में ओबीडी किया, वो 58 में 3 उन्होंने ओबीडी इशू मार्क किया, 55 he has marked it as OBD no issues. And similarly flyer check में 4 shipment at flyer mismatch and 54 didn't have any problem with the flyer. If you are matching this 140 with your ground number, then physically भी 140 मिला है and dashboard is also matching 140, then you can share this code with FE directly. So you can validate before sharing, like issue wala tracking IDs, you can find it. Similarly, flyer check issues also you can find it separately, you will get the tracking ID level details. So as he used to share the NOTC, he will close the task and his whole task is done now. And when you close the summary, his transaction will be gone. His card will be gone because he's done with the transaction. Now Yogesh is gone, only Ganesh is there and Ganesh is having a task open because he's already in the process of scanning. If you share this OTC to Ganesh, Ganesh card will also be gone. So this 290 is currently from expected today, it goes to handover in progress. They say 290 expected today से handover in progress चले जाता है. अब वो NOTC देने के बाद अब जितने वहां पे आपको दिख रहा है उतने के लिए OTC applicable है. अभी मान लीजिए यहाँ पे 10 units sir. If there you consider a situation where expected today has 10 units, OTC is not applicable to that number 10 units. Only whatever is available in handover progress it is applicable. जहाँ पे हैंडओवर प्रोग्रेस में कितने यूनिट्स है उसके लिए ही ओटीसी एप्लीकेबल है. एंड वंस यू लाइक आफ्टर अ मिनट और 2 दिस नंबर गोज टू हैंडेड ओवर, लाइक 1 मिनट 2 मिनट लगता है, वो ये हैंडओवर इन प्रोग्रेस से हैंडेड ओवर चले जाता है 2 मिनट में. हाँ, लाइक ऑल 290 इज हैंडेड ओवर नाउ. तो नाउ यू सो व्हाट वी हैव करंटली सीन इज सेलर को इतना सेलर को पूरा ट्रांसपेरेंसी भी मिल गया, उसका एम्पावरमेंट भी मिल गया कि मैं देखने के बाद ओटीसी दूंगा, कितने स्कैन किया है सारा एक बार वैलिडेट करके दूंगा. आज तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, आपको सारा 0 ही दिखता है. यहाँ पे 100 ओवर में एक्सपेक्टेड टुडे काउंट विल गेट अपडेटेड ओनली आफ्टर 10 बजे रात के बाद आपको अपडेट होता है. तो I'll just repeat it in English. Now with this launch, now seller is given with complete transparency and he is also empowered to understand what has been scanned and what did the whole transaction go like, so that you can validate those number and then you can give an NOTC, right? This is the whole launch of Start OTC and NOTC. Let me just quickly explain the dynamic once again. I know this is a repeat, but just quickly touch base. We just saw how a Start OTC flow and NOTC flow works. So I just have to quickly emphasize on, if you are not in Start OTC, only on dynamic NOTC, you will need to click on this button called Check Updates and OTC to understand the real time. You just have to click once. Once you have clicked, it will automatically start updating it in real time. As the transaction is closed, you will have to click on Review and NOTC to share the OTC. आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. आपको स्टार्ट ओटीसी में आप नहीं हो, आप सिर्फ डायनामिक एंड ओटीसी में हो, तो एक सेलर तो एक ही ऑप्शन में हो सकता है, इधर ही कैन बी ऑन स्टार्ट ओटीसी एंड ओटीसी और ओनली ऑन डायनामिक एंड ओटीसी. आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा. एक बार क्लिक करने से सारा रियल टाइम अपडेट्स आ जाएगा. आप तब भी काम करेगा कि वो एफई आने के बाद ही ये काम करेगा, एफई आने से पहले काम नहीं करेगा.
ये हम इंटेंशनली किया है कि वो एफई कुछ बाहर से कुछ काम नहीं कर सकते, अंदर आने के बाद डिक्लेयर करना है मैं आ चुका हूँ, फिर ये सारा स्कैन्स शुरू होना सारा टास्क शुरू होता है। सो नाउ एक बार क्लिक करने के बाद आपको सारा रियल टाइम अपडेट आ जाएगा, या पे आप एनओटीसी देख के आप लाइक फिर दे सकते हो एफई को। share your screen because we are not able to see your screen. Your window is too minimized. Oh, sorry, my bad. Is this visible now? Yes, actually the entire of the presentation is over in the Like, were you able to see the start and end OTC video? no, actually we didn't see that side. And Tara will try to. This is my visibility view for that. But right now I figure out this is your screen. Like, sorry, Pankaj is there? Just a minute. Pankaj? Yeah, I'm here. Were you able to see the start OTC screen, whatever I was presenting, the video? Yeah, it was visible. Now it is visible, Rahul. It's good to go right now. Okay, so this is only for sellers who are in end OTC, who are not in start and end. A seller can be either on start plus end or only on end. If you are only on end OTC, it is also dynamic. Like every FE will get its own end OTC. You have to just come and click on this button called check updates on OTC once. When after the FE has reached your location, he has started scanning, you can click this button once. You will get the real-time updates continuously coming, and once it is done, you can click on end OTC and check that, and you can hand it over. In both the cases, seller will be given with the real-time feature. The difference is both like you have to come and click once in this dynamic end OTC. Yeah, so I hope this is clear, right? Yes. So what do you guys feel like? Is this helpful? It will help you to understand what is happening. Hello, sir. I have a query. Yeah. Yeah, is this only for self-ship returns or FBF returns? Like, NFBF returns. okay, what Self-ship. about self-ship returns? What do you mean by self-ship? Like, You will which is going directly from our warehouse. हाँ वही है, ये तो उसके लिए है एनएफबीएफ में, एफबीएफ में नहीं है ये। एनएफबीएफ एक आदमी आके पिकअप करता है। Okay. Recently we had a issue like the returns recalls which we have received from the FBF warehouse, right? FBF will be a different team and there will be different webinar. They are also doing few launches. They will tell you that. Okay. Please let us know because we had a similar issue with FBF shipment as well. Okay. So we have received some wrong products. Yeah, thank you. But what do you guys honestly feel like? Will you be able to understand things better? Is it helping you? Rahul, I have a doubt. Rahul. Hello. क्या ये मोबाइल ऐप पे भी Rahul, I am Indrajit from Tonjo. Yeah, so Rahul, this is the new feature is very good, but this is only not the enough for right now what we are facing the situations at our warehouse. Because we are also getting too many returns, logistic returns. Okay. For the customer returns, customer return is OBD that we can manage, and we can now you have come with a new feature that is also acceptable. But how we can reduce the logistic returns? This is not the only feature. Like we will go through. This is the first feature. I'll just go through one by one, right? By the end, you will understand how it will solve your problem. The problem is there. I'll explain that how it will be solved. Okay. But logistic return का तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो तो unnecessary day by day increase ही हो रहा है. I haven't decided. So my question is basically, in this previous history, there are a number of things we have explained this the logistic return. They are normally again a logistic return. However, they didn't
any kind of things that happen in the logistic side. So sometimes they pick up the partner out with the person who have also marked it. It is a logistic. Then I'll do one thing. I'll just quickly go through all the features, right? And then we will understand like how logistics returns also it will be helpful and what are other problems which we are trying to solve. In the interest of time, let me just explain every other issue. The first issue. Yeah. Yeah. Okay, fair, Kushbu. The first issue we have understood that the count is a mismatch, and I'm not able to understand where is this packet going out. And I'm eventually ending up in losses. The second problem, what a lot of sellers have complained is, it takes very high time to return the product. Like if you are, मतलब आपका working capital is also stuck in that because if it is taking 30 days, 30 days worth of product is also stuck with supply chain or stuck with Flipkart. If I deliver it in lesser number of time, lesser number of days, you can restock it and you can sell further. So this is one of an complaint what we have got, and we have introduced two features for sellers, and we have used the same feature to address our supply chain problem as well. What is currently happening? Return takes a lot of time than the forward shipment which comes. Like let's say if you are a seller in Delhi, आप एक दिल्ली में seller हो, Bangalore का customer को, if you want to send, like it goes in 72 hours max, 3 or 4 days max. But for a return, it takes 14 days, 10 days, 15 days, or even more. Because in supply chain also, there is no right prioritization for returns. Supply chain में भी returns के लिए अलग से treatment नहीं दिया गया है अभी तक. इसके वजह से what was happening, as I was mentioning, your capital is tied up in Flipkart logistics. Like if it was coming back on time, you could have reshelved it and you could have sent it further. But it is currently in supply chain. मतलब ये अभी टाइम पे वापस आया होता तो आप एक रीस्टॉक करके नेक्स्ट वाला कस्टमर को बेच सकते थे, बट अभी तो ये पेंडिंग हो गया. So we've introduced two features for it. One, we have introduced the like how customers get a promise date, that after you placed an order, you will get a date, and whole Flipkart runs behind to deliver it on the same date. The same date we have launched two returns for sellers as well. So her seller return inventory, seller return units will get an promise date, and that promise date will be tracked internally to move shipments as similar to forward shipment. There's a forward takes 4 days. Returns will also take 4 or max 5-6 days max. Now plus 2 days max, right? Today it takes plus 10 days plus 15 days. Giving this visibility to seller and then giving it to within Flipkart supply chain team will organically improve the return speed currently how you are getting it. And an additional feature, now you will be able to track where the shipment exactly is at in real-time basis, like how a customer can track it today. It is in Delhi warehouse, it has come to your nearest warehouse, and it will be attempted today. If it has been attempted once, twice, what was the first attempt reason, second attempt reason, what happened? All those historical visibility along with a promise date will be given, and the adherence will be monitored at the topmost priority here. So this feature will be launched by 15th April tentative. What it will solve, it will help you to get your returns back on time, which indirectly or directly going to solve for all the damages happening, because lesser the time a shipment spends in supply chain, the lower possibility of damages. जितने कम time supply chain में spend करता है एक shipment, उतना कम possibility है damage होने के लिए. और जल्दी देने से आप उसको restock भी कर सकते हो. You can restock the same products in your shelves to send it for further customers. To your working capital becomes more optimized. Right. The next problem statement is like, मैंने तो I am getting the same package in return for an RTO, but the inside shipment is different. Like मैंने तो सेम पैकेज तो आ रहा है, मैंने जो भी किसी पैकेट में भेजा उसी पैकेट आ रहा है, बट उस पैकेट में तो अंदर तो माल दूसरा है. और एक दूसरा केस है कि मैंने एक
अच्छा पैकेट में भेज रहा हूँ, आरटीओ शिपमेंट इज कमिंग इन एंड खराब पैकेजिंग और बैड पैकेज में आ रहा है, राइट? द इश्यू क्या है नाउ? There are two cases. One, there's a concept called serialized bags and an e-card bag. In both the bags, you have an unique code. That code, if it is a mismatch between pickup and return, automatically an OBD will happen. This is for both RVP and RTO. Logistics return के लिए भी ये होता है, customer return के लिए भी होता है. जहां पे भी वो कोड का मिसमैच हो रहा है, ऑटोमेटिकली एक फोर्स्ड ओबीडी ट्रिगर हो जाता है. The delivery executive will have to perform an OBD today, right? आज क्या कर देता है, वो पैकेज डिलीवर मार देता है and you have no option to currently claim for OBD, or you will just end up in loss. So the FE did not check anything. He just delivered an RTO shipment. He just scanned the tracking ID and delivered. Now me as a seller, after opening, I understood that is not my package, or like I can see from outside also, this is not a package which I have sent. Now I am stuck with a loss, right? To address this, we are bringing two major launches. Like this is something which like nobody has done it earlier. We are bringing two Khatarnak launches, which is one forced OBD and second on-demand OBD. What is the difference between both? Forced OBD means like if there is a package which was sent from seller and if the in the time of return somebody has tampered it. एक पैकेज सेलर ने भेजा, वापस आने के टाइम पे कोई तो उसको चेंज करवा दिया और किसी ने तो चोरी करा दिया और किसी ने कुछ ना कुछ करा दिया. इसका कोड मैच नहीं होगा तो मैंडेटरीली ओबीडी होगा. वो ओबीडी में इश्यू मार्क करेगा और नो इश्यू मार्क करेगा, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. पर दोनों केसेस में मेरे को फोटो तो खींच के प्रूफ सबमिट करना होगा. तो एफई जैसे नहीं, मान लीजिए मैं एक एफई हूं एंड इफ आई एम द एफई एंड इफ आई एम ओनली डूइंग द फ्रॉड, आई विल आस्क टू डू एन ओबीडी. आई विल जस्ट मार्क अस नो इश्यू एंड गो फॉरवर्ड. मैं एफई में कुछ चोरी करने के बाद एक मेरे को ओबीडी में पूछेगा इसमें इश्यू है नो इश्यू है, मैं तो नो इश्यू मार्क करके चले जाता हूँ. बट इन फ्यूचर वी विल ask him to take photo for both the cases. अब भले इशू मार्क किया है नो इशू मार्क किया है, दोनों में तो फोटो खींचना पड़ेगा. वो फोटो अभी आपको रियल टाइम दिखना भी शुरू हो जाएगा, राइट? अब इसको यूज करके एसपीएफ क्लेम राइज करने से आपको अप्रूवल तो गारंटी हो जाएगा. सेकेंड, जैसे कि लाइक लॉट ऑफ पीपल राइटली पॉइंटेड आउट, आरटीओ में मेरे को कुछ नहीं, देयर इज नो सिग्नल विद मी, मतलब देयर इज, आई जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट. मैं जस्ट ऐसे ही लेना पड़ेगा, मेरे को कुछ भी ऑप्शन नहीं है. इसके लिए हमने ऐसे एक ऑप्शन लेके आया, जैसे क्रिकेट में इफ पीपल हैव फॉलोड, यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड डीआरएस. आप अंपायर का डिसीजन को आप कंटेस्ट कर सकते हो, और लाइक यू कैन कंटेस्ट द अंपायर डिसीजन. सिमिलरली इफ देयर इज एनी पैकेट, भले वो आरटीओ और आरवीपी हो, यू कैन टेक दैट पैकेट, enter the tracking ID in seller dashboard and request for OBD on spot. Before the FE closes the task, he has to mandatorily cater to what seller asks. मैं एक बार हिंदी में एक बार रिपीट कर लेता हूँ. आपको एक पार्सल में दिख रहा है कि इसमें तो मेरे को गड़बड़ है, ये तो देख के पता चल रहा है, और इसमें तो कुछ इतना खराब है पैकेट, ये तो मेरा माल ही नहीं है. इसको वो ट्रैकिंग आईडी निकाल के आप डैशबोर्ड में एक ऑप्शन होता है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑन डिमांड ओबीडी. आप ऑन डिमांड ओबीडी रिक्वेस्ट करोगे, वो एफई को मैंडेटरीली ओबीडी करना पड़ेगा. वो ओबीडी करने के टाइम पे इशू मार्क करेगा और नो इशू मार्क करेगा. दोनों केसेस में भी उसको फोटो लेना पड़ेगा, फोटो सबमिट करना, ठीक है? एंड आफ्टर closing this request only, he can move to OTC screen for end OTC screen. What it will solve for? It will solve for all your problematic packages or problematic जहाँ पे भी दिख रहा है, इसको आप निकाल के directly you can ensure that the logistic guy itself is marking it as an issue, or in the photo you can understand that it is an issue. When you go for an SPF claim, the approval will be 100%. अब जैसे SPF इसको लेके जाओगे ना, वो मार्क करने के बाद, और एफई खुद बोल रहा है कि इसको इशू हो गया और फोटो में पता चल रहा है कि इशू तो है, SPF का अप्रूवल 100% हो जाएगा.
This is applicable to all logistics return, courier returns, wherever you have problem. जैसे courier return में problem है और customer return में problem है, दोनों में ये applicable है. इसका launch है हम 15th में से करेंगे. ठीक है? Quickly, I'll just cover the one more feature what we have, and then we can take questions for last 3-4 minutes, or we can extend for 5 minutes. It's also okay. The last one thing is like मेरे को तो रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है, बट क्लाइम तो रिजेक्ट, मैंने तो क्लाइम किया है, सारा प्रूफ तो दे दिया है, बट उस टाइम पे वो बोल रहा है कि ओबीडी तो नो इशू मार्केट है, मैं तो क्या क्लाइम अभी रिजेक्ट कर रहा हूँ, और ये तो सप्लाई चेन में सारा क्लीन है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैंने तो सप्लाई चेन में वैलिडेट कर लिया, इसमें तो कुछ इशू नहीं है करके क्लाइम रिजेक्ट हो रहा है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू व्हाट सेलर्स वर स्टेटिंग. So essentially what is happening, seller is feeling the whole SPF rejection is a black box. Like मेरे को तो पता भी नहीं है कि SPF टीम क्या देख के रिजेक्ट करता है, और ये रिजेक्शन का रीजन क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. ऑल दैट इससे क्या हो जा रहा है, SPF से भरोसा ही उठ जा रहा है, और लाइक यू आर नॉट एबल टू रिलेट टू व्हाट इज, or like you're not able to even trust the SPF, right? You say I have sent enough proof, I have taken video, photos, but still the rejection is showing us wrong. इसमें तो इतना प्रूफ मैंने सबमिट कर चुका हूँ, फिर भी वो रिजेक्ट कर रहा है, मेरे को बोल रहा है कि रिजेक्ट तो गलत है. अभी लाइक वी आर solving this in two fronts. One, now supply chain signals, like whatever is handed over at the time of returns delivery, like OBD hai, or if a flyer match mismatch hai, and in OBD what is he marking? Is he marking it as an issue or no issue? Everything will be shown in real time along with photos. What photo FE is capturing, that also you can check in dashboard directly. And wherever there is a flyer mismatch, now flyer match or flyer mismatch, that will also be shown along with, if there is an OBD triggered, if there on a mismatch case, it will also be shown. इसमें क्या है कि आपको रियल टाइम में यही तो मेजर होता है, आपको ओबीडी के बेस रिजेक्शन होता है और सप्लाई चेन में दूसरा सिग्नल्स के बेस रिजेक्शन होता है, वो तो फ्लायर होता है. ये दोनों का रियल टाइम पे ट्रैकिंग आईडी का अगेंस्ट पे आपको रिटर्न्स हैंडओवर टाइम पे ही पता चल जाएगी, इसका तो मार्क हुआ इशू वर्क है और नो इशू मार्क हुआ है. वो एफपी ने नो इशू मार्क कर दिया तो आप जितने भी क्लाइम करोगे वो रिजेक्ट ही होगा. आज का दिन पे आपको पता भी नहीं है कि उन्होंने इशू मार्क किया और नो इशू मार्क किया, इसके वजह से आप अलग से क्लाइम करते हो, आपको तो लगता है कि ये तो इशू है, पर एफपी तो मार्क कर लिया नो इशू. आप जितने भी प्रूफ दोगे वो तो रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि एफपी तो आपके सामने नो इशू मार्क किया करके हम मानते हैं. ये इशू, ये अंडरस्टैंडिंग और ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए हम तो अभी रियल टाइम बता देते हैं आपको ये एफपी तो क्या मार्क कर रहा है, और फ्लायर का स्टेटस भी आपको दिख जाएगा डायरेक्टली. इसकी वजह से आप बोल सकते हो भाई ये तो इशू है, इशू मार्क करो सीधा, और आप वैलिडेट भी कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट फाइनली आपको एसपीएफ रिजेक्शन कुछ हो गया, अब इसका बावजूद भी आपको पता भी चल जाएगा कि किस वजह से रिजेक्ट हुआ. अभी कुछ रिजेक्शन मैसेज में हम ये भी डाल देंगे कि इस यही तो फोटो, इसको देख के हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं, सारा डिटेल्स आपको दे देंगे ताकि आप इसको दोबारा देखने के टाइम लाइक अब देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हैंडशेक टाइम पे हमारा ध्यान नहीं था, इसके वजह से उन्होंने नो इशू मार्क कर दिया, नेक्स्ट टाइम से हम ठीक से कराना है. और लाइक you can be more cognizant about the whole handover process, because in rejection, any like first of all we are enabling with all real time with photos, comments, status, everything. Second, in the after all this also, if there's an SPF rejection, then you will also understand on what basis this is being rejected, like what photo is used for validation, and like what is the exact reason why it is rejected will also be communicated, so that you can use this to correct, or you can plan your whole operational vigilance better, right? This is the last feature what we are launching. Quickly running through. One, we are giving you a real-time scan visibility, and start OTC, end OTC is going to be given for and each and every FE level, along with the bag ID if it is coming in a dedicated bag. Point number two, we are going to give you a dedicated promise date for every return items and a tracking window, so that you can understand where is this return coming, and trust me, returns will start coming very fast, quickly now. And third option is where we are giving forced OBD and also on demand OBD. आप demand कर सकते हो, you can demand for OBD.
This feature will be applicable for all RVP and RTO shipments. The last one, what we are going to give is more transparency on the signals captured in supply chain. And if it is a rejection, very crystal clear with proof message on why it is being rejected. So these are all the features which we are currently launching in next 3 months. So a few features are already live, where like all I request you is currently to spend time when the return handover is happening. Put when the FE is there, understand what is being happening. Keep monitoring your seller dashboard. This feature will also be launched in your mobile in 10 days. Even mobile app will also work. और मतलब मैं सारा ये बोलना चाहता हूँ कि सारे लोग आप रिटर्न्स हैंड ओवर करने के टाइम पे आप ध्यान दीजिए और सेलर डैशबोर्ड देखते रहे. ये सारा मोबाइल ऐप में भी आ जाएगा 10 दिन के अंदर. तो ये हम प्लान किया है रिटर्न्स को इतना ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और आपको एम्पावर्ड बनाने के लिए. आप एक next 2 minutes we'll just spend on understanding if there is any questions around this. क्वेश्चन कुछ है तो पूछ सकते हो. Hi. Hello, Rahul. Can I go ahead? Yeah, one by one. Yeah, so we have multiple locations, but we don't have multiple user IDs. When you create a separate user, you only have an option to create operation manager, admin, catalog manager, etc. But I don't have an option to create a user for a particular location. So if there is no separate login ID for each location, I can't give this kind of OTC concept to them, no? Because I'm sitting centrally and managing 3 warehouses. You can create multiple profiles, right? Like you, let's say 3 warehouse, you can create 3 operational executives and you can give them access. But each executive I cannot assign to a particular warehouse. One executive can see the operations for the other 2 warehouses also. There is no user to location mapping, I think. Okay, but I understood that. But all I wanted to say is, like, let's say if you are in Delhi and Delhi like Uttam Nagar, and I am an FE coming to your location. After coming there, I'm gonna swipe. If you have given an operational access to a guy there, only he will be able to see this FE car number after he selecting that location ID, not other location. Like there should be a location ID filter, right? In returns tab, he has to select the location ID of Uttam Nagar. Then he will know that who has reached to that location. Okay, I'll try that. Okay, let me check. Hi, Rahul. My concern is, like, as per my understanding, what you said, like for the logistic return and for the customer return, there will be a open box delivery, right? Yeah. So nowadays, like if we opt for any like open box delivery, you are giving one option to choose, like you can go for the logistics or for the customer returns. In the new feature, there will be option to choose both, and there is another option that you can real time you can choose for post OBD. So what I understand that we have to apply for the open box delivery for both. Yeah, only for the forced delivery we can choose. No, it doesn't matter. Like now, though, I will give you a quota. Let's say 10% of the returns you can go on demand for OBD. Like, if you find any parcel, right, RTO is having an issue or RVP is having an issue, you can flag for any tracking ID. It is not dependent like abhi to RVP sara OBD ho raha hai, RTO to it's not even happening for RTO. In future, it will go like wherever you have a problem, so they can ask for OBD. So, but in the logistic, we can see, like, we are using the transparent packaging, then we can see from the outside, yeah, the product is fake. Okay. But in the customer return, we cannot see now because it's coming in package of the Flipkart return. So, which is also okay, na? Like they say, like how it happens. Today, real time, I'm gonna show you. When he scans and give it to you, just parallelly open and check, like as in just cut and check whether it is your same product or not. If you have a wrong product, ask him to do an forced OBD there. If he has not done an OBD, ask him to do a forced OBD. He will do that even if you have opened the bag. So same time, like we are receiving the packets, we can open. We say no, this is not our product. You can you can enter that. You can scan the tracking ID in the dashboard. It will trigger automatically to him. You don't even have to have a conversation. Okay, got it. Yeah. So it will be applicable from the like mid of April. You said, right? That is coming on May. Like April say shuru kar le, we will start. April end say it will come scale by scale. Like today also real time is already live around 3
70,000 sellers are live, but it will come to everybody in this week's time. Similarly, it will come 10-15 days. It takes to scale up for everybody. Okay, let's see. Once it will be in the process, we will get to know more about this. It's okay. Yeah, but you understood the whole idea, right? What I was trying to tell. Yeah, that is good because sometimes, last time I got one shipment in the logistic. It was everything was same thing you told. I sent in the Flipkart serialized packing each and everything, but it was cut from the down, and the packet the item was taken out, and he put some other items. So I was surprised how it happens. When I check all product, I found, oh my god, it's cut from the down. This was the scenario happened. Yeah, so same thing. Now you can demand for OBD in that before he ends the task. We can say this. Isko OBD karao. He will do an OBD. He will take photo even if it is he is marking issue or no issue. Okay, correct. Okay, that's good. Hi, Raghu. Hi. My doubt is what to do in case of partial returns. Suppose portal is saying 50 returns is coming, but he handed over 49. So should I share the end OTC or he will take each and every packet back? No, you very simple. What 49 scan will be shown in your dashboard. One will be showing as expected today only. The OTC is applicable only for 49. You can share confidently whatever is shown in scanned account for in your dashboard. That is his responsibility to bring it back tomorrow. That will not even be counted as an attempt for seller. It will be like it is pending with e-card. They will come back again on next day. Okay. So hi Ragul, Hi. Indrajit from Tonjo. So actually we are facing a serialized packaging onboarding issue since 2 months. And actually we are using 100% serialized packaging for the last 2 months, or you can say from the December month. Should not be a problem. Have you raised the seller support ticket for it? Yeah, but they are saying we are using a 9%, and I don't know what metrics they are checking, and we are using 100% serialized packaging. Let We are me getting just. 250 orders in a month, and If at you a can time put we that can incident ID in this chat, we can take it up. Yeah, sure. I can put it here. And Yeah. one more thing, Mm. how we can control the logistic return, because we are getting unnecessary returns and numbers. I can give you the one example. If I are getting 200 orders in a month, the 150 is just for the logistic return. No, that is fair. There are two things, right? One is how to reduce the return. Second is whatever return is coming, at least I should be sent like RTO return. Even if it is coming, it should go back to shelf. It should not go back to your disposal. Correct. If it is going to disposal, you should be compensated right for it. There should not be any rejection. Currently, in this whole presentation, we are covering the second part of problem where even if RTO comes, nobody should do a fraud. If there is a fraud, seller will be compensated and the guy who has done the delivery will be taken into accountability. Correct. But the first part The first problem is more on customers front. It's basically a different team who's currently making policies for it. We understood this time we are also investing there where we are trying to find fraudulent customers and removing them so that you don't have wrong orders coming and just placing order and cancelling, right? We are removing those clusters. We are actively investing there. You should find some goodness in 2-3 months there. Because it is not necessary for the product cost. It is combined with the packaging cost, manpower, time, efforts, and advertising cost. Everything is included in this. Right? Very super aligned. I understand the CODB, what your cost of doing this whole business. Very fair. We are also investing some good resource there. You will be seeing some reduction in the next 2-3 months. Okay. My last question. Great. And one more thing, can FE edit the remarks? No issue to issue or issue to from no issue? No, he should not. If I give that option, then he will start put marking issue to in front of you and he will start editing in backend. You will check so when we checked and find out that issue, FE has marked the no issue, then how can he re-edit that? So that's the whole idea. We will in future, right? We don't want to go for this whole all RVPS OBD.
Okay. If I do that, what happens? He will just scan Marcus no issue, scan no issue, scan no issue. Scan उसको क्या है? Scan करेगा, green button दिखेगा, वो दबाएगा. Green का Correct. मतलब है no issue. So future we will enable all sellers with some kind of quota that you can claim for. You can ask for OBD. Wherever you have a problem, you tell, and dedicatedly you will take photos for both issue and no issue, irrespective of it is marked as no issue. No. If he's capturing photo of an wall or if he's capturing a photo of a fan, I will approve in favor of seller. No, Rahul. So my issue is कि अगर उसने एक बार मार्क कर दिया no issue, but उसमें issue है, फिर उसको ये कैसे बोल करेक्ट? रहा हूँ ना, उसको नो इशू मार्क कर दिया, इन फ्यूचर दैट्स वेयर वी विल गो. नो इशू मार्क करने के बाद भी उसको फोटो लेना पड़ेगा. वो फोटो ठीक से, लाइक इफ ही इज टेकिंग अ फोटो ऑफ अ इशू शिपमेंट, आपने भेजा है रेड कलर टी शर्ट, एग्जांपल आई एम गिविंग यू, आपको मिला है ब्लैक कलर शर्ट, उन्होंने तो नो इशू मार्क कर लिया, बट ही हैज टू टेक अ फोटो. एट द टाइम ऑफ फोटो ही हैज टू टेक अ ब्लैक कलर शर्ट ओनली, और बिकॉज ही डजंट हैव अ रेड शर्ट इन हिज हैंड, ही हैज टू टेक सम फोटो. He will take either black shirt or you'll take random photos. If there's a random photo, we will approve the SPF claim. Okay, got it. So I'm putting my reference ID in the chat. So please take it over it. Understood. ठीक है. For the Rahul, surprise packaging. Yeah. one of my claim was rejected because they said that order wasn't packed under video management system. It is mandatory for all orders. Currently, it is mandatory. Yes. In all categories, it is there. In so there are two types. Bit off this conversation, but I'll just quickly explain it to you. We will, wherever you are packing the orders, so basically the idea is to show what you are currently shipping, so that customer can also not say upfront saying a color product mila. We can validate and deny customer request. So my all claims will be rejected then if I don't opt into VMS. Okay. हाय राहुल सर. हेलो. Yes. सर मेरा प्रॉब्लम ये है, जैसे कि मैं बेसिकली गिटार में डील करता हूँ, ठीक है सर. Okay. तो मैं गिटार की जो पैकिंग करता हूँ काफी मतलब कि 5 to 6 लेयर प्रोटेक्टेड करता हूँ उसको मैं बबल रैप से प्लस फोम से. बट फिर भी मेरे जो गिटार्स है इसमें 30% मेरा जो टूट के आता है रिटर्न में, चाहे आरटीओ हो या कस्टमर रिटर्न, तो खैर टूट के ही मिलता है मुझे. आरटीओ भी मेरा 10 to 15% टूटा मिलता है मुझे. आंसर क्लेम करने दो claim चीजें करने- दो चीजें अभी मैं बता देता हूँ, समझ गया आपका प्रोडक्ट. दो प्रॉब्लम इससे दो आप उठा के आपको सीधा सॉल्व करेगा. पहले तो जितना कम टाइम स्पेंड करेगा ना वो लार्ज सप्लाई चेन में, उतना कम डैमेजेस होगा. हाँ. ठीक है. तो हमने अभी तो एक आपका गिटार एक रिटर्न के अगेंस्ट में we will give a date to supply chain team. Every warehouse will now run behind a date. अभी क्या करेगा, रिटर्न को थोड़ा पास में रख के कस्टमर ऑर्डर्स को ज्यादा फोकस दे रहा है, क्योंकि रिटर्न्स में कुछ ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अभी हम वो लेके आ गया है ताकि आपको गिटार टाइम पे पहुंच पाएगा. अभी जैसे डिले होगा, यहाँ से दूसरा जगह रखेगा, वहां पे दूसरा माल ऊपर डालेगा, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है. वो अभी हम स्पीड की वजह से आपको ऑर्गेनिकली कम होगा. दूसरा, जैसे डैमेज हो गया ना, अभी आपको एसपीएफ में कॉम्पनसेशन सही से मिलना चाहिए. उसके लिए हमने ऑन डिमांड ओबीडी लेके आया थी. आप इसको डिमांड करके ले सकते हो. ओके. तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा आपका? आपको सिर्फ वो ट्रैकिंग आईडी डालना है डैशबोर्ड में. जैसे एक एफई आपको स्कैन कर रहा है ना, एनओटीसी आप देने से पहले वहां पे आप डालना है कि इस ट्रैकिंग आईडी को ऑन डिमांड ओबीडी करो. वो ओबीडी करेगा, फोटो खींचेगा. ठीक है सर. तो सर उसमें प्रोडक्ट का फोटो लेगा वो कि सिर्फ पैकिंग का लेगा? उसको प्रोडक्ट का फोटो दिखाना है. वो बिना प्रोडक्ट का कुछ भी देगा ना, फिर तो हम लाइक वी विल नॉट रिटर्न में सर. रिटर्न में ओनली बोल रहा हूँ. ओके. एंड सर अगर जैसे सर मैंने इसका 34 वेयर हाउस का मैंने इसका लिया है, क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग के लिए. तो सर वेयर हाउसिंग तो कुछ इसका मतलब बेनिफिट होगा इसका मुझे? हाँ होगा ना. अगर वहां से माल टूट के मिलता है तो फिर तो उसका सर पूरा चेक ले मुझे मिलेगा, फिर आई थिंक मिलना चाहिए. हाँ सर. मिलेगा. राहुल जी, इसकी पैकिंग में कोई और भी ऑप्शन है क्या इसका? अगर लाइक इसका पैकिंग कुछ और हम पैकेज कर सकते हैं जिससे टूटे ना ये. आपका एसएलसी में है, एक बार हम दोबारा एक सेलर सपोर्ट इंसिडेंट राइज कर लीजिए, हम आपको भेज देंगे क्या लिंक है करके डायरेक्टली आप वापस.
हेलो सर, कस्टमर अगर फ्रॉड कर रहा है तो उसको कैसे रेज कर सकते हैं? मैं ईयरबड सेल कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के थ्रू। कस्टमर क्या करते हैं, मेरे ईयरबड को रख लेते हैं और वो पुराना ईयरबड उसमें डाल करके भेज देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ईयरबड है, एक तो मुझे वो पुराना मिल गया, मैं उसे रीसेल भी नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड क्या है कि मुझे रिवर्स शिपिंग चार्ज भी कट गया, और मैं अगर क्लेम रेज भी करूँ तो अप्रूव होता है ओनली 20 to 30%। तो इसमें तो सेलर का डबल लॉस हो रहा है। तो अब इसको कैसे? इसके लिए हम वो वीएमएस रखा है। आप वीएमएस में सील्ड पैकेट दिखा दीजिए, मेरे एक सील्ड वैरो मतलब सील्ड ईयरफोन्स भेज रहा हूँ करके। जैसे कस्टमर बोलेगा ना मेरे को ये मिला नहीं है और पार्शियली मिला है, वो सारा क्लेम्स को कस्टमर को मिल जाता है, वो कस्टमर को मिल जाता है। फिर कस्टमर क्या करता है, उसमें उसमें रेज कर देता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट, और उसमें वो डिफरेंट प्रोडक्ट डाल देता है। मतलब कि मेरा जो ईयरबड है व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर का वो उसके पास कोई पुराना पड़ा होगा तो वो उसमें डाल करके भेज देता है। हम वो भी अभी जैसे हम चेक कर रहे हैं सेलर जगह पे, हम वो उसी चेक कस्टमर जगह पे भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं ना, पैरेलली वहां पे भी लॉन्च हो रहा है। कस्टमर का पिकअप टाइम पे भी सारा चेक्स होगा। उन्होंने डिफेक्टिव डाल के व्हाइट कलर ईयरफोन्स के बगैर एक ब्लैक कलर ईयरफोन्स दे रहे हैं, तो वो रिटर्न उसको उस 2 स्टेप में रिजेक्ट होगा।